पहली मोहब्बत कब हुई? I think I was 14. किससे हुई थी? एक शख्स से. अच्छा, तो क्लास में था या नेबरहुड में था या कजन था? I knew him through somebody. ओके, through a friend. तो क्या करते थे उसके लिए? गाने गाते थे या मैं गाने गा ही नहीं सकती. मैं गाना गाऊंगी तो दिमाग मोहब्बत में? वही खत्म हो जाएगी. मैं एक्चुअली गाने सुनती बहुत हूँ. अच्छा. मुझे बहुत मजा आता है कि जब मैं लाइफ में किसी So what did you say? Do write letters or did he write you letters? No, I never wrote letters. I think at max I wrote emails, but not letters. And then we have all these WhatsApp and BBMs and messages. I think they took away the charm of letters. I still hope that I can fall in love so much that I write a letter to someone. And if I do, I'm going to call you and tell you that, see, you Because triggered it is that so thought. special writing a letter. It is like going on a train. Have you gone on a train? I mean, yeah, abroad, not It here. is so romantic. It is. But it's so funny that I've been on all these trains with my siblings. So yeah, because you can go away in it. Yeah. आप बैठे हैं वो एक जैसा आपके पास से गुजर रही हैं चीजें and आपका दिमाग फिर कहीं और चला, जैसे किताब में जब आप किताब पढ़ते वो भी उतना ही मुझे romantic किताबें बहुत है ना. attract किताब करती हैं. They take me away आप from कहीं life. और जा सकते हैं ना. जहाज में आप कहाँ जा सकते हैं? When I want to disconnect from life, books are at my rescue. Books disconnect me. So कोई आया ऐसा जो जिसके लिए खत लिखो? खत अभी तो कोई लिखा नहीं है. लिखना चाहती हूँ. अल्लाह करे लिखूं. तो फिर कोई नहीं है? You are not in love with anyone? I think I'm in love, but I love the idea of love. I think falling in love is so beautiful. And I was just going to tell you that whenever I'm in love, or let's say if I'm going on a new project, or see how easily I compare love and my projects. That's how much I love my projects. But so whenever I'm going on something that's making me really happy, I listen to new songs. पिछले छोड़ के, क्योंकि पिछले तो अब पुरानी बातें या पुराना एक्सपीरियंस याद करा देंगे, तो कुछ नया, जो भी कुछ नया गाना अच्छा लगे तो आई लिसन टू देम ऑन रिपीट. एंड लाइक यू आस्क्ड मी इफ आई सिंग सॉन्ग्स, आई लिसन टू देम एंड आई डे ड्रीम. दैट्स व्हाट आई डू. कि मैं गाना गा सकूं. हाँ, मुझे लगता है शायद इसीलिए मैं मूवीज में भी लिप सिंक करना इतना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं आई डोंट थिंक मैं कभी भी रियल लाइफ में गा सकती हूँ. क्यों? पता नहीं, मुझे कोई भी गा सकता है. I hope so. I hope that's true. हाँ. फरहान भाई कहते हैं तुम बैठो, रियाज करने की कोशिश तो करो. तो मैं भाग जाती हूँ. मेहनत लगेगी ना, ऐसे थोड़ी. हाँ, लेकिन मुझे अपनी आवाज़ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है to even sometimes deliver my dialogues, because I have a very sensitive throat, and if I've given like a big monologue the previous night, अगले दिन मेरा गला बंद हो जाता है. तो फिर I have to have kahwas and green teas. अब रियाज के बाद कौन इतनी मेहनत करेगा. So जब बाजार जाती हो क्या चीज उठाती हो सबसे पहले? क्या चीज अट्रैक्ट करती है? जूते. मुझे जूते खरीदना बहुत अच्छा लगता है. जूते खरीदती रहती हूँ. सब पहनती हो? हाँ. या सब पड़े रहते मैं हैं? जूतों से स्टाइल करना शुरू करती हूँ. अच्छा. कि ईद पे मैंने ये वाला गोल्डन खुस्सा पहनना है, तो अब कपड़े डिसाइड होंगे. या अगर उर्वा की बर्थडे पे मैंने ये वाली हील पहननी है, तो अब इसके साथ कपड़े डिसाइड. ऐसे. और उसी की अलमारी की तरफ जाती होगी कि वहां से निकाल. उसकी अलमारी तो मैंने बचपन से नहीं माफ की. But I enjoy it so much, you know. I tell Urva that I said even if I have that same very thing in my own cupboard, जो खुशी मुझे मिलती है ना to pick it up from your cupboard, जो मुझे सुकून मिलता है to wear your things, ये matchless है बिल्कुल. कभी मना किया उर्वा ने? She loves me too much, and I think I exploit that. मुझे नहीं याद कि उसने कभी मुझे कहा हो. कभी लड़ाई हुई? लड़ाइयाँ तो of course we fight like normal कौन मनाता है? people. You know, I wouldn't call it a लड़ाई, क्योंकि there's a very clear understanding of Urva being right. So even while I am having a quarrel with her, I know she's right. So वो बड़ा guilty conscious होता है फिर कि अभी 2 मिनट बाद मुझे कहना पड़ेगा कि you were right, तो उससे बेहतर है कि अभी चुप कर जाऊँ. So sometimes वो चीज़ थोड़ी बढ़ती है, वरना most of the time I know that she's right. So I have to be the one who apologizes because I'm wrong. So if you're wrong, there's no shame in apologizing. I'm mostly wrong with her because she's mashallah so wise, and somehow she's always right. When you look at her, you can feel that she's the quiet one. हाँ. है ना? She's the wizard in the family. Oh yes, है ना? 100%. हाँ, वो लगता है. I think at least my life decision
Just all of the decisions, they are absolutely dependent on my sister. It's very difficult for me to take. मतलब अभी मैंने इन कपड़ों की भी पिक्चर भेजी उसको. Is this okay? He's like, yeah, it's okay. So isn't it difficult No, when you are on your own? Because now she's married, now she's, उसकी अपनी जिंदगी है और तुम्हें भी अपनी बनानी पड़ेगी. You will fall in love, you will get married, you will have a home. I mean, I thought that maybe these things. क्योंकि इतना फिर आप जब इतने ज्यादा करीब होते हैं और जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो मुश्किल तो होता है ना. I don't know. I cannot think of a life where I cannot ask her everything. I would not understand that life mostly. So I'll always ask her these many questions. And also, it's a very blessed space to be in. That somebody is always looking out for you. कि आपको ठीक है, आपको at max क्या मुझे बात माननी पड़ती है तो कुछ भी नहीं है. Someone's always looking out for me and someone's always wishing my best. That's such a constant blessing that I've had since I'm born. Yeah, I would never. कुछ regret करती हो? Yeah, sometimes you choose people that you think are, they're not what you think. So investing so much time and energy and affection and compassion on those relationships is what I would regret. But then I read this somewhere that you'll never regret the love you give out, but you'll always regret the anger or the bad you do to someone. So yeah, with that belief, I've started to let go. But yeah, I think the most you regret is being misunderstood by people that you've given your compassion and love and affection to. आसानी से दोस्ती कर लेती हो. You trust easily. Not anymore. I think it's being a child or being younger is a bliss. Because you're ignorant of most of the things and what a relationship could take from you. You're unaware. लेकिन ये ज्यादती नहीं है कि इंसान अगर कभी हर्ट हुआ हो तो फिर अपने आप को बदल ले. Because it takes away the spontaneity of being who you truly are. But don't you think it's natural? Don't you think it's natural that when you're growing up, now I can't think like the girl who I was when I was 8 or 14 or even 20, When you're younger, you know less, so you worry less. The more you know, the more you worry, is what I feel. But I also think that worrying for yourself and taking care of yourself is very important. Because if you won't, who will? It's very, very important कि आप खुद को prioritize करें. आप खुद के emotions को, you should first be able to love your own self before you. अपने आप को कैसे feel करती हो? नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, काम से. मुझे मेरा काम बहुत खुशी देता है. ये अजीब सी खुशी है जो मैं I don't have words to explain it. I just always hope कि क्योंकि अब दिल लग गया है ना काम में बहुत ज़्यादा, तो अब ऐसा समझ आनी शुरू हो गई. हाँ, अब जाके समझ आनी शुरू हुई है. तो मुझे अब दिल करता है कि जितना प्यार तब मिला है जब समझ ही नहीं आती थी और मिल जाता था प्यार और लोगों को काम अच्छा लग जाता था, अब ज़रूर मिले. अब वो विश आ गई अंदर. अब आपका दिल करता है कि whatever you work hard on, when people watch it, you wish and pray that they like it and they love it. Do you paint? No, I don't. And